Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. I hope that you all are fine. Dear students, today we are going to continue our unit number 1 of grade 8th, that was the Holy Prophet's Justice. So, first of all, I am going to ask a few questions from you about the previous lecture which we have learned on the other day. So, my first question is, which quality was implanted in Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a nucleus? कि कौन सी ऐसी खूबी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरकज़ी हैसियत के तौर पर मौजूद थी? So obviously, if we are learning the chapter of the Holy Prophet's justice, then obviously they are talking about justice. So what will be the answer of that question? Its answer will be justice was implanted in Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as a nucleus as a result of divine training. Second question concerning with the previous topic is, how does the Holy Quran emphasize justice? एम्फसाइज मीन किसी बात पर स्ट्रेस देना, ठीक है, किसी बात पर जोर देना. तो कुरान मजीद में इंसाफ पर किस तरह से एम्फसाइज़ किया गया है, क्या फरमाया गया है इंसाफ के बारे में? सो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसके आंसर में हमारे पास कुरान मजीद की यही आयात होंगी, ठीक है, सूरह निसा की, जो कि हमने उस दिन पढ़ी थी. O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it is against yourselves, your parents, or close relatives, be they rich or poor. Allah is best to ensure their interests. So do not let your desires cause you to deviate from justice. If you distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. So now moving towards our today's lecture. So before starting our today's lecture, first of all, you will have to take a pen or pencil in your hand. You will underline the new words and write its English meaning and Urdu meanings on your books, and later on that will be your homework. So first of all, take a pen or pencil in your hand and open your books from page number 2. So he opposed oppression and injustice in his youth, and he joined the Pact of Social Justice, Halful Fudul, an association which was formed for fair commercial dealing in pre-Islamic Makkah. Halfaf means oath, whereas Fudul means people with virtue. He opposed oppression. Underline the word oppression. Its English meaning will be cruelty. Cruelty, zulm, ठीक है. He opposed mean मुखालिफत करना, ठीक है. He opposed oppression, आपने जुल्म की मुखालिफत की, and injustice और नाइंसाफ़ी की, in his youth अपनी जवानी में, and he joined और आप शामिल हो गए, शमूलियत अख्तियार कर ली, ठीक है, the pact of social justice. Underline the word pact. The English meaning of the word pact will be contract. Pact, contract, यानी कि मुआहिदा. So एंड ही जॉइंड द पैक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, और आपने समाजी इंसाफ के मुआहदे में शमूलियत अख्तियार कर ली. एंड नाउ दे आर गोइंग टू टेल अस द नेम ऑफ दैट एसोसिएशन. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट एसोसिएशन? दैट्स नेम इज़ हल्फुल फुदुल. इन इंग्लिश यू विल प्रोनाउंस दैट वर्ड इज़ हल्फुल फुदुल, whereas in Urdu you will pronounce that word as halful fuzul. So and he joined the pact of social justice, halful fudul, और आपने समाजी इंसाफ के मुआहदे हल्फुल फजूल में शमूलियत अख्तियार कर ली. एन एसोसिएशन विच वाज फॉर्म्ड फॉर फेयर कमर्शियल डीलिंग इन प्री इस्लामिक मक्का. अंडरलाइन द वर्ड एसोसिएशन. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज यूनियन, तंजीम. देन अंडरलाइन द वर्ड फॉर्म्ड. फॉर्म्ड मीन कायम की. देन अंडरलाइन द वर्ड कमर्शियल. कमर्शियल, इट्स इंग्लिश मीनिंग विल बी ट्रेडिंग, यानी कि तिजारती. Then underline the word dealing. Dealing means लेन देन. And then pre-Islamic मक्का, कबल अज इस्लाम. अब बा मुहावरा तर्जुमा हमारे पास क्या हो जाएगा? एंड ही जॉइंड द पैक्ट ऑफ सोशल जस्टिस हल्फुल फुदुल, और आपने समाजी इंसाफ के माहदे हल्फुल फजूल में शमूलियत अख्तियार कर ली. एन एसोसिएशन, ये एक ऐसी तंजीम थी विच वाज फॉर्म्ड फॉर फेयर कमर्शियल डीलिंग इन प्री इस्लामिक मक्का, जो कबल अज इस्लाम मक्का में अच्छे तिजारती लेन देन के लिए कायम की गई थी.
Here, the comprehension question arises that what was the name of the association whom Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam joined? What was the name of the association whom Holy Prophet joined? So, what will be the answer of that question? Its answer will be the name of that association whom Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam joined was Halful Fudul. So, Halfaf means oath, whereas Fudul means people with virtue. Oath means qasam. Underline the word oath. Urdu meaning of the word oath is qasam. Whereas Fudul means people with virtue. Then underline the word virtue. In English, you will pronounce that word as virtue. Virtue, not virtue. Okay? Virtue. Its English meaning will be goodness, इकदार. So, हल्फ के मानी है कसम, whereas फुदुल means people with virtue, जबकि फजूल के मानी है इकदार वाले लोग. Here, one more comprehension question arises that you will have to note down on your books too, and that question is written in front of you. That is, what does the word fudul means? So, its answer will be the word fudul means people with virtue. People with virtue. Moving towards the next page, page number 3. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. First thing you will have to focus is that in English you will pronounce that word as Arabs, not Arab, Arabs. Then underline the word administration, administration. Its English meaning is management, management, nizam ya intizamiya. Then underline the word justice. Here the word justice means adliya, okay, courts. Then based, based. Its English meaning will be found, mabni ya कायम किया. Then sound, sound का मतलब वैसे होता है आवाज़, यहाँ पर क्या हो जाएगा सही. And then underline the word foundation, foundation. Its English meaning will be base, बुनियाद. Before Islam, इस्लाम से पहले, the administration of justice system, अदलिया का निज़ाम, अदलिया का निज़ाम was not based on a sound foundation among the Arabs. इस्लाम से पहले अदलिया का निज़ाम, या यूँ कर लें, इस्लाम से पहले अरब में या अरब में, जी अरब के दरमियान या अरब में कर लें, इस्लाम से पहले अरब में अदलिया का निज़ाम सही बुनियादों पर कायम नहीं था, सही बुनियादों पर मबनी नहीं था. There was no written law to be taken on a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. Underline the word written. Its English meaning is tehriri. Then basis, obviously, basis means bunyad. Then underline the word implementation. Implementation. Its English meaning is amal dramad. Then resolving. Resolving. Hal. And conflicts. Conflicts mean tanaze. Then underline the word discretion. Discretion. Its English meaning is choice. Choice. अख्तियार. So, there was no written law to be taken. वहाँ पर कोई भी तहरीरी कानून नहीं था. कहाँ पर? अरब में. ठीक है. There was no written law to be taken. वहाँ पर कोई भी तहरीरी कानून नहीं था. To be taken on a basis for implementation, जिसकी बुनियाद पर अमल दरामद किया जाए. And resolving conflicts was left to the discretion of judges. और तनाज़ों का हल मुनसिफ़ों के अख्तियार में छोड़ दिया जाता था. बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा पूरी लाइन का कि वहाँ पर कोई भी तहरीरी कानून नहीं था जिसकी बुनियाद पर अमल दरामद किया जाए और तनाज़ों का हल मुनसिफ़ों के अख्तियार में छोड़ दिया जाता था. However, the decision was not absolute because the powerful might not act conform to judgments against them. Underline the word absolute, absolute. Its English meaning is definite. Absolute, definite. यानी कि मुकम्मल. Then underline the word confirm. Its Urdu meaning is manzoor. And judgments. Judgments. Its English meaning is decision. यानी कि फैसला. However, ताहम, the decision was not absolute. फैसला मुकम्मल नहीं होता था, खालिस नहीं होता था. Because the powerful might not conform to judgments against them. क्योंकि ताकतवर अपने खिलाफ फैसला मंजूर नहीं करते थे. क्योंकि ताकतवर अपने खिलाफ फैसला मंजूर नहीं करते थे. For this reason, the weak were usually found guilty. Weak मतलब कमज़ोर. ठीक है. अब वो थिन वाला कमज़ोर नहीं बल्कि जो वैसे कमज़ोर हों. ठीक है. जैसे हम लोग बोलते हैं कि फ़लाँ बड़ा
हैन को में वर्ड यूज़ करते हैं तगड़ा है, ठीक है, माली लिहाज वगैरह से। सो फॉर दिस रीज़न, इस वजह से द वीक वर यूजुअली फाउंड गिल्टी, अंडरलाइन द वर्ड गिल्टी, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज सिंफुल, यानी कि कसूरवार। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से द वीक वर यूजुअली फाउंड गिल्टी, गरीबों को या कमज़ोरों को आम तौर पर कसूरवार ठहराया जाता। द होली प्रॉफिट बेस्ड द जस्टिस सिस्टम ऑन द प्रिंसिपल टू गिव अ पर्सन हिज और हर स्टेचर, to give a person his or her due, no matter whatever his or her stature may be, dominant or oppressed. Justice means adliya. Here the word due means justice, यानी कि इंसाफ, ठीक है। And stature, मकाम, dominant, ताकतवर, and oppressed, कमज़ोर। The Holy Prophet based the justice system on the principle to give a person his or her due. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदलिया का निज़ाम इस असूल पर कायम किया कि हर शख्स को इंसाफ मिले, नो मैटर वट एवर हिज और हर स्टेचर में भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जो भी उसका मकाम हो, डोमिनेंट और ऑप्रेस्ड, चाहे वो ताकतवर या कमज़ोर हो। ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद्स टाइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हेयर द वर्ड टाइम डजंट मीन्स वक्त, यानी कि दौर आ जाएगा, ठीक है, एरा। ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद्स टाइम, आप सल्लम के दौर में, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. Cottage means झोंपड़ी, and a piece का मतलब क्या हो जाएगा, कता, ठीक है, किता। ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद्स टाइम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. ज़मीन के एक किते पर एक झोंपड़ी तामीर होनी थी जिसका ताल्लुक दो भाइयों से था। The heirs disputed ownership of the cottage. हेयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वर्सा, वारिस की जमा, ठीक है। एंड डिस्प्यूटेड मीन तनाज़ा। द हेयर्स डिस्प्यूटेड ऑनरशिप ऑफ द कॉटेज, वर्सा में झोंपड़ी की मलकियत के बारे में तनाज़ा था। द वेंट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिजॉल्व द इशू, वो इस मसले को हल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। ही असाइंड Huzaifa bin Yaman to handle the case. Underline the word assigned. Its English meaning is allotted, namzad kiya. Huzaifa bin Yaman to handle the case. He assigned Huzaifa bin Yaman to handle the case. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले के हल के लिए हुज़ैफ़ा बिन यमन को नामज़द किया। Here one more comprehension question arises, and that is written in front of you, that whom Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam assigned to handle the case. Its answer will be Holy Prophet assigned Huzaifa bin Yaman to handle the case of the cottage. So Huzaifa went to the cottage for discovery and investigation. Investigation took statements from various people, took evidences from witnesses, and presented his decision to the Prophet sallallahu alaihi wasallam for his approval. हुज़ैफ़ा वेंट टू द कॉटेज फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब क्या हो जाएगा, मालूमात। इन्वेस्टिगेशन, राइट, इट्स उर्दू मीनिंग इज तहकीकात। देन अंडरलाइन द वर्ड स्टेटमेंट्स, इट्स मीनिंग विल बी बयानात। वेरियस मीन्स मुख्तलिफ, डिफरेंट। एविडेंसेस, एविडेंसेस मीन शहादतें। विटनेसेस, गवाह। एंड अप्रूवल, अप्रूवल मीन मंजूरी। हुज़ैफ़ा वेंट टू द कॉटेज फॉर डिस्कवरी एंड इन्वेस्टिगेशन। हुज़ैफ़ा बिन यमन मालूमात व तहकीकात के लिए झोंपड़ी पर गए। टुक स्टेटमेंट्स फ्राम वेरियस पीपल, मुख्तलिफ लोगों से बयानात लिए। टुक एविडेंसेस फ्राम विटनेसेस, गवाहों से शहादतें ली। एंड प्रेजेंटेड हिज डिसीजन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर हिज अप्रूवल, और अपने फ़ैसले को मंजूरी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। ही कंसिडर्ड द डिसीजन एंड अप्रूव्ड इट। Underline the word considered. Considered, its English meaning will be think over, यानी कि गौर करना, ठीक है। He considered the decision. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फैसले पर गौर किया and approved it, और इसे मंजूर कर लिया। Here one more comprehension question arises, that why was an inquiry initiated by the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam while resolving the land dispute? Answer will be that an inquiry was initiated by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam while resolving the land dispute.
For investigation, he also wanted to collect evidence from witnesses so that the decision could be given on the basis of justice. That question is also added in your exercise, so you'll have to remember it. I think so that it's enough for today. And now moving towards the main points of today's lecture. So the main points of today's lecture are: the first one is that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam oppressed oppression and injustice in his youth. The second main point is that the pact of social justice whom Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam joined was Halful Fadul. And third point is that the word halfaf means oath, whereas the word fudul means people with virtue. I'm not translating these main points for you in Urdu because I have already translated the whole chapter, the whole lecture in Urdu. So now these are just main points in English, so you will have to remember it in just English. The fifth main point is that the Holy Prophet based the justice system on a sound foundation. And then we learned one event about justice, and I think so that it's enough for today. Going towards your homework is to write comprehension questions of today's lecture on assignment pages with proper presentation. Means to say कि जो आज हमने पढ़ा है, आप को अगर किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कोई कन्फ्यूजन है या ट्रांसलेशन में क्लियर नहीं है, तो आप इस वीडियो को 2 3 4 5 बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहें। और आपने इनमें जो मैंने 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किए उनको, और इसके साथ साथ जो न्यू वर्ड्स और उनके इंग्लिश मीनिंग लिखे हैं उनको आप जूम इन करके वीडियो को पॉज करके अपनी असाइनमेंट पेजेस पर नीट एंड क्लीन करेंगे विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन. That's it. Thanks and have a nice day.